फील हो रहा है कि प्रॉब्लम है, तो ये पहले समझना कि इस प्रॉब्लम में आप अकेले नहीं हो। आजकल के जो डेटाबेस जो है और जिस तरह के पेशेंट्स हम देखते हैं उसके हिसाब से हर 4 से 6 कपल्स में एक को फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और मेल फर्टिलिटी, अब पहले जो 20% 30% के फिगर्स हम बताते थे, अब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हाफ द कॉजेज, मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें आधा तक उनकी हिस्सेदारी रहती है। तो अब ये बदलते हुए एनवायरनमेंट को बोलिए, लाइफस्टाइल के स्ट्रेस को बोलिए, स्मोकिंग, अल्कोहल के यूज को बोलिए, या फिर जेनेटिक्स, जो फैमिली रिलेटेड और जेनेटिक्स रिलेटेड अनुवांशिक कारण जिनको बोलते हैं उनकी वजह से बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स की भागीदारी ऑब्वियसली इन कॉजेस में बढ़ी है। तो अगर आपने कहीं कंसीव करने में प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, और आपका सीमेन टेस्ट हुआ है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और आप इस कंडीशन में अकेले नहीं है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो और फेस टू फेस और वन टू वन इंटरेक्शंस और अच्छे से समझा पाएंगे। मैं बस एक ब्रीफ और एक जागरूकता बोलिए, चाहे एजुकेशन बोलिए, ये बताने के लिए आज यहाँ इस वेबिनार मैंने ज्वाइन किया है कि ये इश्यूज जो है इसमें काफी हद तक ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है, और अपना जेनेटिक चाइल्ड भी करना पॉसिबल है। तो आगे बढ़ते हुए जनरली, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 30% जो है सोनली मेल रिलेटेड इश्यूज के वजह से, और एडिशनल 20% में थोड़े से प्रॉब्लम फीमेल और थोड़े से मेल की वजह से 50% की भागीदारी मेल रिलेटेड इश्यूज की फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में हो जाती है। ये एक एनाटॉमिक स्लाइड है बेसिकली, ये समझाने के लिए कि ये जो सर्कल है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, ऑब्वियसली स्क्रोटम में जो टेस्टिस होता है वहाँ जो है स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं, और वो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम बोलते हैं, उसके थ्रू प्रोड्यूस होकर उसके थ्रू प्रोड्यूस होकर वो यहाँ से होते हुए ये एपिडाइडिमस में जाते हैं। एपिडाइडिमस से होते हुए यहाँ कुछ दिन स्टोर रहने के बाद वो फिर इस वाज डिफरेंस से होते हुए बाहर इजैकुलेशन के लिए प्रोस्टेट के अंदर से, यहाँ ब्लैडर के पास से, फिर इस तरह से पेनिस के थ्रू बाहर ये इजैकुलेट आता है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा लंबा रास्ता है, इसमें अगर कहीं भी इन्फेक्शंस की वजह से या फिर जेनेटिकली कुछ हिस्सा अगर इसका नहीं बन पाया हो, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से कई बार जो है स्पर्म बाहर तक नहीं आ पाते, और उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और वहीं अगर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ स्पर्म्स का फॉर्मेशन अगर ना हो, तो हम इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और ये तो सीवियर केसेस में ऐसा होता है। अगर माइल्ड जो छोटे मोटे कारण होंगे तो हो सकता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है किसी एक हिस्से में ट्रॉमा हो और किसी एक हिस्से में फंक्शन अच्छी हो, तो फिर कभी कभी स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन काउंट्स भी कम हो सकते हैं। तो समझने के लिए, प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, फिर वो इस ट्यूब्यूल की तरह काफी लंबा रास्ता तय करते हुए बाहर इजैकुलेटिंग स्पर्म्स आते हैं। फिर अगर हम कारण में जाएं तो कुछ कारण जो इफेक्ट कर सकते हैं वो प्री टेस्टिकुलर, जो कि ब्रेन से जो हॉर्मोन्स आते हैं और स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनमें अगर कुछ कमी आ जाए, या ब्रेन ट्यूमर है, किसी तरह की सर्जरी हुई है इस, या फिर कोई पार्ट जो है जेनेटिकली बना नहीं है, तो उस तरह के केसेस में, और फिर पूरे बॉडी को अफेक्ट करने वाली जो बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आपका उन हॉर्मोन्स की कमी के कारण टेस्टिस में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो सिग्नल सही नहीं मिलने की वजह से वहां स्पर्म्स जो है उनकी उनमें कमी आ जाती है या वो नहीं बनते। दूसरा है टेस्टिकुलर कॉजेज, उसमें अगर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, जैसे वाई क्रोमोसोम, जैसा कि हम जानते हैं कि वो मेल को डिनोट करता है, तो अगर उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है, फिर हम जानते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हैं, तो अगर कोई सीलियरी डिजीज
जिसमें सीलिया फॉर्मेशन ना हो ढंग से, तो उसके केसेस में स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अगर टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है चाइल्डहुड में, जब आप वूम में, मदर के वूम में होते हैं, तो वो पेट के अंदर एब्डोमेन में होता है, फिर वो डिसेंड करके स्क्रोटम में आता है। तो अगर वो कहीं पेट में ही रह जाए और बाहर स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाए, या फिर किसी दवाई की वजह से, कीमोथेरेपी, रेडिएशन की वजह से टेस्टिस में कोई खराबी आ जाए, या उसकी ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे टॉर्शन हो जाना, या वैरिकोसील, जो कि उसके ब्लड वेसल से बहुत मोटे हो जाते हैं और वहां पर प्रॉपर जो है सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, तो ऐसे केसेस में फिर टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जैसे मैंने बताया पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस, तो इसमें वही जो लंबा रास्ता स्पर्म्स तय करते हैं, तो उन ट्यूब्यूल्स में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से भी आपके स्पर्म्स बाहर ठीक से नहीं आ पाते हैं। या फिर इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो या इजैकुलेशन ही ना हो पाए, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। तो अगर आप एज अ कपल अप्रोच करोगे, तो कोई भी डॉक्टर पहले आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेगा, जैसे एज है, या फिर आप किस तरह का काम करते हैं, पहले आपको क्या बीमारियां रही हैं, डेवलपमेंट कैसा था चाइल्डहुड में, कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मम्स, इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है, या फिर कुछ दवाइयां आप यूज करते हो। तो ये सारे हिस्ट्री लेने के बाद आपकी सीमन एनालिसिस जनरली एडवाइस की जाती है। कोई प्रॉब्लम अगर आप पहले से बता रहे हो, तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपके पार्ट्स का हो सकता है। अब सीमन एनालिसिस और फिजिकल एग्जामिनेशन या आपके कंप्लेंट्स, जैसे कि अगर कोई कॉइटल डिफिकल्टीज है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसके आधार पे आपके आगे के ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा भी कई एडवांस टेस्ट है, लेकिन पहले कुछ मीटिंग्स में और जो फर्स्ट लाइन के जो टेस्ट होते हैं उसमें इतना ही आता है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी है, या फिर आप किस तरह का काम करते हैं, लंबे समय तक बैठे रहने का स्ट्रेस ज्यादा है, या फिर आप फार्मर है, पेस्टिसाइड रिलेटेड या हेवी मेटल रिलेटेड एक्सपोजर्स ज्यादा है, या गर्मी में बहुत काम करते हैं, आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है कि बच्चे समय पे नहीं होते, या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके लाइफस्टाइल में टोबैको, अल्कोहल, या फिर किसी तरह के ड्रग्स की यूज की प्रॉब्लम रही है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको खुल के अपने डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंट में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हॉर्मोन्स की तरह काम करते Why not clear? हैं। ऐसा हो सकता है कि ये आपके बॉडी के बैलेंस को बिगाड़े, उसकी वजह से इस तरह के फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इन्फेक्शंस के बारे में तो हम जानते ही हैं, टीबी जो बहुत ही कॉमन है, फिर मम्स, प्रोस्टेट, एपिडाइडमिस, यूरिन के इन्फेक्शंस है, या फिर फीवर आपको अगर बहुत ज्यादा रहा हो, तो इनके वजह से भी स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर चाइल्डहुड हिस्ट्री में अनडिसेंडेड टेस्टिस है, अगर हाइपोस्पेडियाज जहाँ पर प्रॉपर जो है ओपनिंग अगर नहीं बनी है, या चाइल्डहुड में कभी इंजरी हुई है, तो ये सारी चीजें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको कोई सर्जरी हुई है हाइड्रोसील की, हर्निया की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स की बात करें तो फिर ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के लिए कई कुछ दवाइयां ऐसी दी जाती है, या फिर एंटी एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, या फिर जो लोग जिम जाते हैं कई बार वो टेस्टोस्टेरोन न जाते हुए या जान कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आपके डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी हाइट, बॉडी में हेयर किस तरह के हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, सारा एग्जामिनेशन में पैल्पेशन के थ्रू, और टेस्टिस का लोकेशन, उसमें कोई इन्फेक्शन है, टेंडरनेस है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है स्क्रॉटम की, या फिर पैल्पेशन में कुछ ट्यूब्स के पार्ट्स अगर मिसिंग है, जैसे वास डिफरेंस प्रेजेंट है या नहीं है, इस तरह की चीजों को जानने के लिए आपके जनरल और फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ सकती है। सीमेन कलेक्शन जो कि बहुत ही कॉमन है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लेकर और सही जगह से ये टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि सारे लैब्स जो है स्टैंडर्ड अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। तो बहुत जरूरी है कि जिस लैब में आप सीमेन टेस्ट करा रहे हैं वो डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग करें, और
इसके लिए प्रॉपर गैप रखे जो कि 2 से 7 दिन है, उसके बीच के गैप में आप ये टेस्ट कराएं। अगर ये टेस्ट आप 2 दिन से कम के अंदर करा रहे हैं तो हो सकता है काउंट्स में कमी आ जाए, या आप 7 दिन से ज्यादा में अगर ये टेस्ट करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी मोटिलिटी इश्यूज जो है स्पर्म्स में ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए बीच का जो टाइम है 2 से 7 दिन का सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर कंसेंट के साथ ये टेस्ट करते हैं, और जो स्पर्म है वो स्पिल डब्बे के बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो डब्बा भी दिया जाता है सीमेंट कलेक्शन के लिए वो स्पर्म फ्रेंडली होता है, मतलब उसमें ऐसे कोई टॉक्सिन्स नहीं होते जिससे कि स्पर्म्स की उसमें डेथ हो जाए। डेथ हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली डेड स्पर्म्स ज्यादा आएंगे। इसलिए सही जगह से ये टेस्ट कराना ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि इन कंटेनर्स का टेम्परेचर भी प्रॉपर फर्टिलिटी लैब्स में मेंटेन किया जाता है। इनको एक वार्मर में रखा जाता है जिससे कि इनका टेम्परेचर 20 से 37 डिग्रीज के बीच में ही रहे। और जनरली ये वाइड माउथ मतलब बड़े मुंह वाले होते हैं, सो दैट आपका स्पर्म जो है बाहर स्पिल ना हो जाए। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो जनरली 1 से 3 महीने या 2 हफ्ते, कई बार अगर इम्प्रॉपर कलेक्शन हुई है तो 2 हफ्ते के अंदर भी आप इसको रिपीट करा के कंफर्म कर सकते हैं। तो जो रीसेंट गाइडलाइन है उसमें वॉल्यूम की बात करें तो कम से कम 1.5 ml के आसपास या उससे ज्यादा को नॉर्मल माना गया है। और काउंट की बात करें तो 16 मिलियन पर ml, या फिर टोटल वॉल्यूम में 39 मिलियन स्पर्म्स को नॉर्मल माना गया। प्रोग्रेसिव मतलब स्पर्म की जो आगे बढ़ने की क्षमता है एटलीस्ट 42% मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है। और जो स्पर्म्स है दिखने में कम से कम 4% जो है इसमें नॉर्मल होने चाहिए। तो सीमन के इस रिपोर्ट के साथ आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, तो फिर वो इसके रिपोर्टिंग के बेसिस पे आपको आगे के ट्रीटमेंट के लिए गाइड करते हैं कि किस तरह से आप इस रिपोर्ट के हिसाब से आप नॉर्मली ट्राई अगर करेंगे तो क्या चांसेस है। अगर मोटिलिटी कुछ कम है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपको आईयूआई, जिसमें स्पर्म को प्रोसेस करके यूट्रस के अंदर तक पहुंचाया जाता है, उस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं, जिसमें कंसेप्शन करीब करीब नेचुरली होता है, बस स्पर्म्स की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। या फिर अगर बहुत ज्यादा मोटिलिटी या फिर काउंट की कमी है तो हो सकता है कि आपको आईवीएफ या इक्सी की भी ट्रीटमेंट के ऑप्शन दिए जाते हैं जनरली। आज के इस क्लास में इतना ही मैं समझाना चाहती हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Hello, ma'am. हाँ, हेलो। Uh, there are some questions in the chat box. या आई जस्ट so this being a pan India webinar, I think some people are not able to get the language. ठीक है, लो काउंट के लिए बहुत जरूरी है कि पहले वी हैव टू confirm that actually the count 2 million हो चाहे 4 million हो, whatever we are seeing in the sperm count, it should be confirmed that yes, consistently इसी level पे reporting आ रही है, and after that we can plan the further treatment. If there is obviously you know that your husband is having such and like smoking or alcohol is a problem, that obviously Hello. should be dealt with first. Hello. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. I'm Vaibhav. Yes, Vaibhav. Hello. Ma'am, yesterday I visit your hospital near Raghuveer, sir, for this fertility problem and take a treatment. Okay. Okay. My issue is I I completed 3 years for the marriage, and before 2 year I try for the baby. But we Okay. optimize have the some problem in the varicose veins and the semen analysis. Means in a semen analysis, semen concentration is the low. Okay. Previously, we observed the 3 million only and 3 ml semen.
reach low. But we take some medication like homeopathic. Now semen is increased by the 11 to 12. Yes, I okay, am working in a pharma and continuously exposure with the drug also. okay, That time I am when take a medication. That time I must stop the working with the drug and okay, documentation. That time increases. Now I am again work because my own major work is with the drug. I am a formulator scientist. Hence, hmm. again maybe is impact on the my Sperm count it's is coming low again. coming that yes. And Okay, ma'am, one is a varicose problems also is with me. Already test with the previously 4 to 5 month before. There is a show the grade 2 and grade 3 grade of varicose. In that time, okay. start the homeopathic medication. But it is just they are the actually one known doctor. They are the treat for that. Hence, I am start the homeopathic medication and the sperm count are increases, but not that much increases. Just like you told, na, 39 million is necessary. See, I can't comment about the homeopathy part, okay? Yeah, What yeah, yeah. I was trying to say that if there is a whenever you are meeting your doctor and taking the test, if it is on whatever level that report will give, based on that treatment is prescribed, and there can be some variability from one lab to another lab, from one person to another person when they are checking the sperm count. But overall, if it is coming in the lower range, then obviously the treatment is required. One, you are saying varicocele, other part you are saying exposure to pharma drug. So obviously, whatever precautions your workplace requires, you have to take. Okay, because obviously one cannot see, as long as you are planning fertility, you can take some sabbatical or gap from that exposure, so that when your fertility part is completed, then you can rejoin with proper precautions. Because obviously, when something is affecting you, it is not affecting the sperm only, it is also about overall health. So, proper precaution, proper gear for the workplace, whatever it Yes. is, you have to take. Ye- And changes in the sperm count can happen from 1 month to another. But we have to understand that if we are seeing counts as low as that, whether our primary aim of conceiving and having a live birth is getting fulfilled or not. Okay. So you have to, since you're already seeing a doctor, I think you having a consultation and direct discussion with him will be more fruitful for you. But you are in the right place also if you are consulting an andrologist. But the main thing which I was already saying that if somebody is seeing that the count is low, and if you are seeing there are certain obvious whether someone is having alcohol and smoking or somebody else is taking because of workplace, pesticide, drugs exposure, or something like varicocele, which is obviously progressive. Na? From grade 2, it is becoming grade 3. So that is very, grade 3 is significant, basically. So varicocele, it does not only affect the count, motility, but also affects the quality of whatever sperm is there. So, but in your case, I think with proper treatment, your self, child, and conception is very much possible. So you should continue treatment and complete with your fertility part first. Because obviously, I cannot comment about other lines of treatment for which I have had no formal training. But I think continue with whatever treatment is being prescribed will help you more. Okay, okay, ma'am. And one question is, ma'am, along with that, this sperm count, just like 11 ml and 12 ml, it is a possibility to conceive the pregnancy, ma'am? Sorry, what level you said? 11, 12 ml. 11 ml 11, this million. million, yes, million. Yes, yes, it is possible. When we talk of treatment, it is the count and it is the quality of the sperm and the motility and also the appearance. So there are many factors to it. Only just the 11 million count is one parameter, out of many parameters. So if you are having sperms in that range, I think treatment and conception is possible.
Okay, okay. Yeah. And ma'am, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, sure. You're welcome. आईवीएफ में मोस्ट ऑफ केसेस दो बेबी एक साथ कंसीव क्यों होते हैं? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। थैंक यू। ओके राम। सो बेसिकली दो बेबी क्यों कंसीव होते हैं? क्योंकि व्हेन वी आर क्रिएटिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो बनाते हैं, भ्रूण जिसको बोलते हैं आईवीएफ में, सो इफ वी पुट बैक वन, देयर आर चांसेस ऑफ 60% या 50% ऑफ कंसीविंग, एंड ऑल्सो अनदर जो दूसरा हाफ है 40-50% ऑफ नॉट कंसीविंग. So some people whose embryos are either जो रिस्क नहीं लेना चाहते और थोड़ा सा चांस बढ़ाना चाहते हैं, they want to increase their chance of conceiving, they ask for two embryo being transferred. So sometimes in this cases what will happen, 30% people will have double conception, मतलब कि twin. If embryos are not very good quality, they are lower quality, then putting back two can lead to maybe one, none or two. और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो फिर ऑब्वियसली more chances of conceiving too. That's why twin happens. But personally I feel कि single baby, then pregnancy journey is very easy and safe, and that is a better option. And rest you can discuss with your doctor according to your medical conditions and requirement, because twins in itself, it is okay, uh, but there are complications which are more with twin pregnancy. Motility percentage is 25%. Is it possible to get pregnant? See, a count kitna hai, total count, total number of sperm, and that is also very important. But if it is a good count with 25% motility, I think we should see that jo 67 million here. I think it is very much possible. And if motility can be increased, if there are no infections, then naturally also you can conceive. And if it's on the lower side, or if it decreases, then maybe you'll need IUI. I think that is all the questions. Now we have few questions. If you scroll above. So they are non-specific about adenomyosis. Yes, miss. This is not a adenomyosis in itself alone. I wouldn't say ki will cause infertility, but obviously it can affect the success rate with any treatment, whether if you have a normal pregnancy or if you have IUI conception or IVF. So additional treatment for adenomyosis will also be required. Teratospermia is when the sperms does not look normal. So its contribution, it not conceiving, obviously if 100% sperms are abnormal, then conception is a problem. If it is on the lower side, then I think we also look at the count and motility. If it is good, then we can certainly try normally. And if it is not giving results, then only we suggest for further treatment. Lifestyle, if you have any addictions, alcohol, smoking, doing exercise, maintaining optimal weight, I think all that definitely helps. The kind of food you are eating, stress you are taking in your work, all that, if you improve, all these factors will definitely improve. For treatment, I think you should face-to-face meet one doctor. I think that's all, Sundarya. I don't see any more. Yes, ma'am. Thank you so much for Hello, guiding. madam. And okay, there's some other question. I think. Hello. Yeah, hello. Madam, what is the least count, sperm count and least motility for getting success in IVF, madam? IVF. See, nowadays what is more common is ICSI. ICSI is intracytoplasmic sperm injection. That is, sperm is injected in the cytoplasm of the oocyte or the egg. So we hold the egg from one end and we pick the sperm from one end and inject the sperm into the
oocyte. So 1 egg, 1 sperm requirement. So with ICSI, if we have 1 good normal egg and 1 good normal sperm, we can go ahead and do the ICSI. Madam, I'm asking what is the least sperm count must be there and what is the million count must be there for getting IVF pregnancy? IVF. Hmm. See, that's what I'm telling you, no? Matlab getting sperm even in nil sperm patient. What is the least count rate, madam? I am asking. Motility rate and count rate. What is the least? Least total motile sperm count. If you have 1 million sperms which are motile, then that is actually required for IVF and ICSI. And what I am trying to tell you that in cases if there are no sperms also in the ejaculate, there also with surgery, if I can get the sperm, then 10-30 good sperms, if I'm getting, that can also be used for pregnancy. Okay. So what I'm trying to say that there is no lower cutoff. Matlab, if there are nil sperms, but if we do a surgery like microtese and TISA, and if we get the sperm from the testis, and it is a good normal sperm, that can be used for the egg, and if embryo is formed, pregnancy can happen. Okay. Thank you. Okay, madam. Thank you. Okay, you're welcome. Hello, ma'am. Yeah, hello. Hello. Hello, ma'am. Just one last question, if I may. Yes, please tell me. Yeah. So, I have a report with the varicocele detected. So, if we opt for the varicocele surgery, right, how safe it would be to go with the surgery option for varicocele? Okay. So if varicocele has been detected, then it is a very safe procedure. The Okay. side effects or complications that we see is very less with the standard procedure that has been done in the last many years. So infection rate or bleeding rate, all these things, obviously it is taken care. It is very less, and anesthesia is one thing. So if you go ahead with a proper fitness and medical fitness, if medically you're not having too many issues, then I think that part is also taken care of. And as such procedure, you have to understand microscopic varicocelectomy is nowadays is the best option. And that Okay. with that the recurrence of varicocele has a tendency of recurring. So with microscopic varicocelectomy, the chances are very less of recurrence. So that is the standard procedure that is nowadays prescribed. Okay. You'll Okay. get Yeah, more thank you. confidence if you meet the doctor. Sure. Yeah, sure. Thank Hello. you. Hello. Ma'am, actually, one query from my side. Is there any test genetic test conducting from sperm? Ma'am? Yeah, so DNA fragmentation index is one test which is done, and genetic test is specifically for low sperm count, very low sperm count, and azoospermia or null sperm is karyotype and Y chromosome testing, microdeletion testing. And But DFI is basically the genetic health of the sperm that is tested. So these are certain tests which are done. And also there is one sperm aneuploidy testing which is done, but it is not very much in common use because testing is okay, but use is very less. ma'am, actually, we are having a problem of both wife and husband carrier, ma'am. PXDN. Okay. So we are we got no, two baby, but we lost it during abortion, ma'am. Okay. It's actually it's a problem with the high cataract. Okay. So have you gone with the genetic counseling? Yes, ma'am. We gone with the genetic counseling. It shows PXDN gene carrier. Okay. So basically they also suggest whether IVF with PGT testing, PGTM, to rule out the single gene in the baby is possible or not.
So that opinion also you can take. Basically, for every gene, whether it can be tested or localized is also taken as an opinion. So if they have diagnosed this gene, so if IVF is done, embryo is created, and in those embryo, wherever if there are no PXDN in that embryo, then only the embryos without this genetic variation is used to implant. Ma'am, so which kind of test we go for it? Basically, you have to find out whether PXDN can be excluded in the embryo by So PGT. So basically, it will require you to consult your geneticist further whether PGT can be done with IVF for you. okay. Hello, madam. Yeah, hello. Madam, which is the best medicine for improving motility percentage, madam? See, best medicine is lifestyle modification, and there are basically, as I told you, about uh, habits like alcohol, smoking, food habits, avoiding all kinds of unnecessary drugs or medications, and Okay. improving your medical health if you have diabetes or hypertension for which you are taking medicine, and also exercise. So all these things are first line. Okay. Okay, madam. So if you continuously do for 3 6 months, and then you will see there is a certain improvement. Apart Yeah. from that, medicine wise, there are plenty of antioxidants in the that are available, and it is given. Basically, you should realize vitamin E, vitamin C, and there are certain coenzymes which are given, and zinc, Okay. astaxanthin, all these things combinations are there which are given. Okay, okay, madam. Thank you, madam. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Okay, so I think this is it. Yeah, sure. Yeah, thank you, ma'am, for answering all the questions so patiently, and thank you everyone for joining us. I And think I'm language sorry was for some the problem because most of the people, I think they were from Telugu and Kannada, maybe, but recently I met Tripod, so yes, yes, and okay. also we will be having Telugu webinar also. Hello. So Yeah, hello. uh, हेलो Yeah, I can hear you. नमस्कार मैम Namaskar. मैम हमने लेप्रोस्कोपी करवाई थी अभी मई में कहाँ करवाई थी क्या? लैप्रोस्कोपी करवाई थी? जी मैडम ट्यूब की लेप्रोस्कोपी करवाई थी हाँ हाँ, मई में करवाई थी अच्छा. तो अभी तक हम ट्राई कर रहे हैं तो कंसीव नहीं हुआ है तो हमें फर्दर क्या करना चाहिए हम Basically, ओसिस फर्टिलिटी भी गए थे वहाँ पे हाँ भी इंक्वायरी वगैरह की थी उस टाइम अच्छा मई में हाँ. तो बेसिकली आपका नाम बताएंगे क्या? दिख नहीं रहा है मुझे. आराम हाँ राम, तो बेसिकली देखिए जब आपको कंसीव नहीं होता है तो कई बेसिक चीजें टेस्ट की जाती हैं, जिसमें पहला एक है सीमेन का टेस्ट कि नॉर्मल होना चाहिए. दूसरा टेस्ट कि एग बनना चाहिए रेगुलरली, रप्चर होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए. तीसरा टेस्ट है कि एग रिलीज होकर ट्यूब में आना चाहिए, ट्यूब खुला होना चाहिए. यूट्रस जहाँ प्रेगनेंसी आती है वो नॉर्मल होना चाहिए. उसके अलावा ये कि पूरी बॉडी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कम नहीं, अनीमिया नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, थायराइड नहीं होना चाहिए. तो कई सारे ये सारे टेस्ट रहते हैं, बहुत एस्पेक्ट रहते हैं. अगर ये सारी मैडम ये चीजें सारे अच्छी टेस्ट है, हमने करवा लिए थे अगर ये सारी चीजें अच्छी है, वही मैं बोल रही हूँ, अभी मैं आ रही हूँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई है. तो जी 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 वो भी एक कैटेगरी होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट है जो हम कर सकते हैं. ऐसे भी कई चीजें हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, या अगर हम उसको टेस्ट करने जाएंगे, इफ वी डिसाइड टू टेस्ट सर्टेन फैक्टर्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव और दे आर नॉट पॉसिबल. या तो वो बहुत महंगी है, या तो फिर उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है. शायद आईवीएफ करने से ज्यादा उस टेस्ट करने का कॉस्ट पड़ जाता है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में व्हेन यू आर डूइंग आईवीएफ, देन आपका टाइम ड्यूरेशन वगैरह मुझे नहीं मालूम है. बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको नॉर्मली ट्राई करने में नहीं कंसीव हो रहा है, तो सारी चीजें एक बार दोबारा से डिटेल में देखने की जरूरत है. शायद आईयूआई और उससे भी ना हो तो फिर आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है, जहां आपको क्वालिटी इश्यूज अगर कुछ है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्यूब पेटेंट है,
लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी नहीं है। जो फॉलिकल्स हम स्कैन में देख रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं, फूट भी नहीं रहे, लेकिन उसमें एग ही नहीं है, या एग है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या स्पर्म और एग मिल नहीं पा रहे हैं, फ्यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, कुछ एंजाइम्स उस लेवल पे मिसिंग है, या फिर एम्ब्रियो बन रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन का जो पार्ट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, बॉडी रिजेक्ट कर रही है, या फिर वो केमिकल्स, वो रिसेप्टर्स जो होने चाहिए वो नहीं है। तो कई चीजें छोटी छोटी ऐसी है ना जिनका टेस्टिंग नहीं हो सकता है। ये रीजंस जो है कई बार आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट से अपने आप ट्रीट हो जाते हैं, तो बाकी के डायग्नोसिस भी सारे हो जो जाती है और ट्रीट भी हो जाती है। तो बेसिकली आपके केस में मैं कुछ सलाह नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये बात को समझते हुए आपको दोबारा एक बार मिल लेना चाहिए और डिस्कशन कर लेना। मेरी 25 है और मेरी वाइफ की 23 है। हाँ, वो एज देखो, अब एज तो आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन वी आर नहीं ट्राइंग। अगर हो रहा है तो एक बार मिल लेने से कम कई बार और समय देने के लायक अब है, सब चीजें नॉर्मल है तो और समय कुछ वेट कर लीजिए और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को थोड़ा इम्प्रूव करिए। 2 साल से ट्राई कर रहे हम्म। हैं। और जो सारी रिपोर्ट्स आप बता रहे थे वो फॉलिकुलर स्टडी, हाँ, नहीं नहीं, मैंने उनका बताया जो ना इसलिए एज वो। काउंट है, हम्म। सारी चीजें मैंने मतलब प्रॉपर करवा रखी है। हाँ हाँ एक्चुअली आई एम फ्रॉम, तो सारी करवा रखी है। सारे मतलब रिपोर्ट से नॉर्मल है। मैंने गूगल से भी रिसर्च नहीं, करके आप जो चेक बातें करा बोल रहे था। हैं वही मैंने उसी का जवाब दिया है कि इसी को अनएक्सप्लेन बोलते हैं, जहाँ कई बार टाइम, अगर किसी का 6 महीने में कंसीव हो रहा है तो किसी को 6 साल लग जा रहे हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे वर्क करने की जरूरत रहती है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं देख रही हूँ हो सकता है कि कंसीव करने का स्ट्रेस ही कई बार कंसीव नहीं करने देता, जैसे क्योंकि 4 लोग इतना पूछते हैं कि उसका स्ट्रेस ही जो है कंसीव करने का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता मेरा मतलब मेन यही मतलब क्वेश्चन है कि मुझे फर्दर क्या करना चाहिए। मतलब जैसे अभी है। हमने लेप्रोस्कोपी से भी आए हैं, करवाई है, तो मतलब अगर आगे सारी की जो मैं। चीजें एक बार जी सारे रिपोर्ट लेकर मिल लीजिए, फिर आपको शायद और समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ मिस हो रहा हो, अगर नहीं मिस हो रहा है तो थोड़ा टाइम और दीजिए, एज तो आप कम ही बता रहे हैं। जी मैम, एज मेरी कम है, दो कुछ 2 साल तक है। Okay, ma'am, we are running short of time, या so it's better. So time it will be good to end now. End it now only. So thank you, ma'am. Thank you for ओके, joining us. या And for further questions, can we call in the number that is given in the chat box? And for our next webinars also, I have provided a link. You guys can register there. Thank you for joining us, and apologies for the technical glitch that we faced in the beginning. So thank you, ma'am. Thank you so much. ओके, यू वेलकम, नाइस टू चैट विद एवरीवन, थैंक यू। Thank you, everyone. हेलो मैम, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ टू कांटेक्ट डॉक्टर्स? हेलो मैम, अगर डॉक्टर को कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? Is there an online way to connect doctors of Oasis Fertility?